Hello students, here we are going to start our next chapter of science and the chapter name is kinds of animals. So in previous chapter we have seen about animals around us. So let's start. There are three kinds of animals. First is bird, insect and reptiles. So let's start from birds. All birds have feathers on their bodies. They have two wings and two legs. Wings help them to fly in the air. So birds have feather on their bodies. Birds के bodies पे क्या होते हैं? Feathers होते हैं. They have two wings and two legs. Wings help them to fly in the air. Wings से उनको क्या help मिलती है? Wings से उनको air में वो fly कर सकते हैं. So in this picture there are so many example of birds. There is dove, flamingo, kingfisher, parrot, sparrow, swan, turkey, penguin, peacock, woodpecker, ostrich, kiwi, eagle, crow. So peacock, in this picture there is a peacock and peacock is national bird of India. Peacock is national bird of India. So did you know one thing? The largest bird is ostrich. Which is the largest bird? Ostrich is the largest bird. And which is the smallest bird? So hummingbird is the smallest bird. Hummingbird is the smallest bird. So you can see in this picture there is penguin and he is swimming. So penguins are birds but they are excellent swimmer. Penguins are birds but they are excellent swimmer. मतलब penguins ये birds है but वो क्या कर सकते हैं? वो excellently swim कर सकते हैं in the water. So next is insects. There are different kinds of insects. They are found everywhere, especially in very hot and damp places. We can see them in gardens and in our homes. Insects are very small. कैसे होते हैं वो? Small होते हैं and we can found them everywhere, especially in very hot and damp places. Specially insects कहाँ पाए जाते हैं? Hot and damp places पे. And we can see them in garden and in our houses. हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं? ज़्यादातर garden and हमारे घर में. All insects are small. All insects are small. कैसे होते हैं insects? Small होते हैं size में. They have 6 legs. They have 6 legs. Some insects have wings. कुछ इंसेक्ट्स को क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. सो देयर इज सो मेनी इंसेक्ट्स इन दिस पिक्चर. यू कैन सी देयर इज एंट, बी, बैटल, बटरफ्लाई, बग, कैटरपिलर, कॉकरोच, स्पाइडर, लेडी बग, मस्कीटो, फ्लाई. सम इंसेक्ट फाउंड इन आवर हाउसेस. ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर कहाँ हमें मिलते हैं? हमारे किचन में. या हमारे घर में. सो विच आर द इंसेक्ट? लेट्स सी. एंट, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मस्कीटोज. दीज आर द इंसेक्ट विच वी कैन फाउंड इन आवर हाउसेस. You can see in this picture there are 2 more insects. Which are they? Butterfly and dragonfly. Butterfly and dragonfly. You can see them in a garden or on the plants. So next type is reptiles. They are many kind of reptiles. They are mostly found in desert, forest and wet and damp places. Reptiles
बहुत तरीके के होते हैं एंड मोस्टली वो कहाँ पाए जाते हैं? इन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड वेट एंड डैम प्लेसेस। दे हैव लॉन्ग बॉडीज एंड वेरी पावरफुल जॉज। उनको रेप्टाइल्स की बॉडी कैसे होती है? लॉन्ग एंड दे हैव वेरी पावरफुल जॉज। दे क्राउल ऑन द ग्राउंड। वो क्या करते हैं? ग्राउंड पे क्राउल करते हैं। स्नेक स्लाइड्स एज दे हैव नो लेग्स। स्नेक्स क्या करते हैं? ग्राउंड पे स्लाइड करते हैं क्योंकि दे हैव नो लेग्स। देयर आईज आर सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स। उनके आईज कहाँ होते हैं? उनके हेड के टॉप पे होते हैं। आप कुछ पिक्स में देख सकते हो स्नेक्स के आईज कहाँ पे होते हैं? उनके हेड के टॉप पे होते हैं। सो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स. So you can see in this picture there is tortoise, snake, crocodile, lizard. So in this picture you can see tortoise and crocodile. They are reptiles. Snake and lizard. This is also reptiles. So it's your homework time. So your homework is write true or false. For right statement you can write it true, and for wrong statement you have to write false. So first one is ant can fly. First one is ant can fly. So you have to write this answer as true or false. Second one is penguins are big birds. Second one is penguins are big birds. Third one is an alligator is an insect. Third one is an alligator is an insect. The fourth one is insect have 4 legs. Insect have 4 legs. And fifth one is reptiles have powerful jaws. Reptiles have powerful jaws. You have to write answer of this question as true or false. Thank you students for watching the video.